My name is Warda, roll number 23, and this is the recording of exercise number 5 of geocoding, which is using alternate street names and place name aliases. इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट जो एड्रेसेस हैं उनको हम बाय फाइंडिंग और बाय सर्चिंग देयर नेम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। अच्छा, to perform this exercise, I need to open a blank arc map. फाइव एक्सरसाइज में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि किस किस तरह से हम लोगों ने क्या क्या परफॉर्म करना है। आई एम गोइंग टू डिस्कस these all of the steps one by one. So यहाँ पे I need to click on the catalog option and then navigate towards the folder where all of my data is placed. So here is the folder जहाँ पे हमारा डेटा प्लेस है। यहाँ पे I need to drag down this and then my mouse is not working. I need to drag down this layers. So and the next step in this exercise, click on this folder and create the address locator. Need to select the address locator file, new address, dual window, market process file, line, and new address, dual window. Okay. In reference data, select speeds. Let me see the next step over here. Okay, the role of over here need to be primary table. And then
Okay, next step in this exercise, I need to add more reference data. And then click on the part name table. The role for this alt name table should be alternate name table. Okay, next step, I need to add more reference data. I need to add place aliases over here and this. And then need to drag down this and click alias table row. नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसमें ये है I need to check these alias name over here. alternate name table जो है उसके आगे alt name जो है उनकी जो alias name है वो आना चाहिए. It should be automatic. If it is not, then you need to select this name. और primary table जो है alt name उसके आगे street जो है ये जो है JOIND आना है जो है वो चाहिए. It is automatic. If it is not, then you need to select this by dragging down or clicking on this alias name. By moving further in the alias table, in alias table, click the arrow alias name. Okay, I need to place alias's name. I need to click on this. In alias table, I need to drag down this and place alias's name. The other is correct. I don't need to change the rest of it. And I need to specify the output name and path of this. Very interesting. I need to change its name. Alt at Warda. Address and then okay. Address locator and then process of generating and creating. Next step is finding the location using alternate street names and place name aliases. Close this catalog now. Open this find too. Click on the location and write and browse first. Okay, it is automatically detected the Atlanta alt address locator. Now, and then click on this full address and write 30 on 10th Street North East and then find. Click on this first one. The point is mentioned over
here, right click on this to select the candidate and add one. So जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है उसके बाद यहाँ पे पॉइंट अपीयर हो गया है. Then I am going to add another address. Atlanta. Fine. Click on this and add point. By searching on this, मतलब ये सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे और जो पहले हमने पॉइंट ऐड किया था वो दोनों आपस में मैच हो गए हैं. इट मीन्स इट इज शोइंग द सेम लोकेशन ऑन दिस एरिया और ऑन दिस मैप. अब यहाँ पे हम फुल एड्रेस में सर्च करके कोई भी जो है वो लोकेशन निकाल सकते हैं. सपोज आई एम सर्चिंग एटलांटा मार्केट. यहाँ पे जो है ये मार्केट जो है ये जितने भी मार्केट आए उसमें से फर्स्ट वन पे क्लिक करके एंड देन क्लिक ऑन दिस फ्लैश. After flash, okay, select this and add point. तो यहाँ पे जो है एक मार्केट है अटलांटा में, इससे हम सर्च कर सकते हैं. यहाँ पे जो पहले सर्च किया था 30 Atlanta. क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे फ्लैश करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यही सेम पॉइंट है जो पहले यहाँ पे हमने सर्च किया था 10th Street North East में. Now we can close this window by cancelling. So it was the first exercise of geocoding कि हम लोग जो है एड्रेसेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग अल्टरनेट स्ट्रीट नेम के थ्रू. हम लोग प्लेस नेम जो है वो कैसे जो है वो निकाल सकते हैं. I am going to save this changes. So my name is Warda and I have completed all of the exercise of geocoding. And it is the last exercise of geocoding. So I'm going to stop sharing my screen and ending my exercise.